Good morning, student. I am going to teach chemistry of class 8, chapter 3rd. Name of the chapter is element, compounds and mixture. First, mixture. Mixture is a material obtained by mixing of two or more substance in any proportion is called mixture. For example, air is a mixture. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Next, characteristic of mixture. There is no energy change. First point, there is no energy change during फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर बनने के दौरान कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर इज द मिक्सचर डज नॉट हैव ए fixed boiling and melting point. Next characteristic, the constituent of a mixture can be separated by physical methods like hand picking, winnowing, filtration, sedimentation. Next, types of mixture. First type, homogeneous mixture. Second type, heterogeneous mixture. First, homogeneous mixture. A mixture in which the different constituents are mixed uniformly. यहाँ इसका जो constituent है वो completely mix रहता है. For example, brass is a mixture of zinc and copper. Next, heterogeneous mixture. In this mixture, which the different constituents are not mixed uniformly. Example, soil. Types of heterogeneous mixture: suspension and colloidal. Suspension, it is heterogeneous mixture in which solute-like particles settle out of a solvent. For example, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर. मिक्सचर ऑफ चॉक वाटर को जब चॉक एंड वाटर को थोड़ा देर छोड़ देंगे तो चॉक पाउडर धीरे धीरे वह सेडिमेंट कर जाएगा नीचे. नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन. व्हेन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है उससे कोलाइडल पार्टिकल्स थोड़ा सा बड़ा होता है. For example, milk is complex mixture of calcium and sugar and other vitamins that cannot be separated by filtration. Separation of substance from a mixture. एक मिक्सचर से उसके सब्सटेंस को कैसे सेपरेट किया जाता है. There are many processes to be used for separation of substance from mixture. First, hand picking. Second, magnetic separation. Third, gravity separation. Fourth, sublimation. Fifth, solvent extraction. Sixth, sedimentation and decantation. Seven, evaporation. Eight, distillation. And nine, fractional distillation. Now I am going to discuss separation of solid mixture. Solid mixture separated by hand picking. This method is used to separate of components of mixture in different size and color. For example, stone separated from grains. स्टोन का साइज और ग्रेन का साइज डिफरेंट होता है जिसके कारण वो हम पिक कर लेते हैं. अगर ग्रेन और स्टोन का साइज सेम है तो कलर से हम उसको पिक कर लेते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर. फॉर एग्जांपल, mixture of iron nails
and sand मिक्सचर ऑफ आयरन नेल्स और सैंड को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग करते हैं, क्योंकि आयरन नेल्स मैग्नेटिक सब्सटेंस है. आयरन नेल्स सेपरेटेड बाय मैग्नेट. Next process is sublimation. This method is used to separate sublime substance from a mixture. मिक्सचर से सबलाइम सब्सटेंस को सेपरेट करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड सैंड. व्हेन वी हीट मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड सैंड, NH4Cl evaporate and sand separate out. NH4Cl, it is a slime substance. It is directly changed into gas. Next process, gravity separation. This method is used to separation of components of mixture in which one of the component is much lighter than water. इस प्रोसेस में मिक्सचर को सेपरेशन करते हैं क्योंकि दो मिक्सचर, एक लाइटर और एक हेवी पार्टिकल. लाइटर मीन्स लाइटर देन वाटर, हेवी मीन्स heavy than water. For example, mixture of sawdust and sand. When we put this mixture in water, sawdust above the water and sand below the water in a bottle. Sand is heavier than sawdust. Next process is used to separate solid mixture by solvent extraction method. This method is used to separate components from a mixture in a suitable solvent. For example, a mixture of sulfur and charcoal. जब मिक्सचर ऑफ सल्फर और चारकोल को हम कार्बन डाइसल्फाइड में रखेंगे, इसका सल्फर का सुइटेबल सॉल्वेंट, तब यह क्या होगा, सल्फर मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में and charcoal separate out. Charcoal separate हो जाएगा. Next method, separation of solid liquid mixture. अब हम पढ़ेंगे solid और liquid mixture को कैसे separate किया जाता है. First process, by sedimentation and decantation. In this method, solid particles settle down as sediment, whereas clear liquid separate out. फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ मडी वाटर. जब मडी वाटर को हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो उसका जो सॉइल पार्टिकल्स है वह धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स हेवी देन वाटर सेटल डाउन होगा. उसके बाद विदाउट डिस्टर्ब वाटर सेपरेट आउट फ्रॉम देयर मिक्सचर. देन सॉइल sediment is called sedimentation, or when we separate water without disturb is called decantation. Next process is filtration. In this method, the mixture can be separated by filter paper. फिल्टर पेपर में जब मिक्सचर को डालते हैं तो जो लिक्विड पार्ट है वह फिल्टर करके नीचे हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर बच जाता है. दिस सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट पार्ट इज कॉल्ड filtrate. Next process, evaporation. This method is used to separate salt from seawater. सी वाटर से हम साल्ट को सेपरेट करते हैं बाय दिस मेथड, इवेपोरेशन. नेक्स्ट, डिस्टिलेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सोल्ट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. वाटर में जो सोल्ट इम्प्योरिटीज रहता है उसको हम इस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं. इन दिस प्रोसेस लिक्विड चेंज इनटू वेपर. इस प्रोसेस में होता है पहले लिक्विड वेपर में चेंज कर जाता है, देन कंडेंस्ड, उसके बाद वह कंडेंस्ड होता है और सेपरेट हो जाता है. नेक्स्ट मेथड टू यूज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर, सेपरेटिंग फनल. दिस apparatus is used to separate two
immiscible liquid. This apparatus is used to separate two immiscible liquid. For example, separation of oil from water. जब ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोसेस यूज टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दिस इज लिक्विड लिक्विड सेपरेशन. दिस मेथड is used to separate miscible liquid applying the principle of different boiling point. यह प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. हर एक सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. उस मेथड से हम यहाँ दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड गैसोलीन फ्रॉम क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करते हैं बिकॉज सभी का पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेपरेशन ऑफ गैस गैस मिक्सचर. गैस का मिक्सचर हम सेपरेट अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस बाय डिफ्यूजन, सेकेंड बाय प्रेफरेंशियल लिक्विफिकेशन, थर्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय फ्रैक्शनल इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में 9 में पढ़ेंगे. इस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन. दैट इज द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर. एंड ऑफ थर्ड चैप्टर, फर्स्ट टर्म completed.